नेगेटिविटी, हेट एंड फियर, जब इन तीन चीजों को आप कंबाइन करते हैं, यू क्रिएट सच अ पावरफुल कॉम्बिनेशन कि इसके बेसिस पे यू कैन अर्न मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ द स्किन केयर इंडस्ट्री. ये आज का सच नहीं है. दिस हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. और आज हम इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू रिवील टू यू द टॉप 10 ways in which skincare brands, influencers, doctors, dermatologists, esthetician, anybody who belongs to this fraternity lies to you. ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो काफी सारी नॉन रेगुलेटेड हैं, जिसके बेसिस पे या तो लोग शो ऑफ करते हैं या लोग इन जनरल आपको इंफीरियर फील कराते हैं. दोनों ही केसेस में it's not really worth it. So today we're going to get into it. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today's video is busting the myth, the lies, all of the nonsense that is said around skincare brand marketing that you should be aware of. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं बनाती हूँ रोजाना science-backed skincare videos. Skincare Simplified is the only channel on planet Earth where you get detailed skincare routines. और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं one-on-one in a closed community, you want me to review your routines, you want me to make changes to them, you can join the channel memberships for $7.99 a month or $10 a month. Join button is next to the subscribe button. Now let's get started. So जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो बहुत सारे फार्मा ब्रांड्स या फार्मा ब्रांड्स तो नहीं पर जो ब्रांड्स फार्मेसीज में बहुत मिलते हैं उस पर देखा जाता है, एंड दैट इज योर लाई नंबर 1, dermatologically tested. It means nothing. A dermatologically tested brand is not necessarily a dermatologist loved brand. मतलब मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने या मेरी टीम ने एक ब्रांड को टेस्ट किया. ठीक है, ब्रांड ठीक है, हमें पसंद नहीं आया, हमने डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें उसके पैसे मिले हैं उस पर टैग लगेगा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, because it has been tested by dermatologists or has been tested in a lab. Any product which is dermatologically tested is neither superior nor inferior. वो बस टेस्ट हुआ है and that's it. लेकिन डर्मेटोलॉजी एक अच्छा सा वर्ड दे के लोग उसके लिए एक प्रीमियम पे करते हैं. So you do pay a premium for brands like CeraVe or Cetaphil because they are dermatologically tested. और इसी से एक नया वर्ड आता है dermatologist approved. और ये वर्ड बहुत बड़ा स्कैम है. क्यों? Because dermatologist approved doesn't come free of cost. इन्फ्लुएंसर्स को बहुत बुरा नाम दिया गया है इंडस्ट्री में कि इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ भी प्रमोट करते हैं, रोज एक नया प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, डॉक्टर्स कम हैं. आप सोचें अपने लाइफ के बारे में. थिंक अबाउट एनी टाइम आपको सर दर्द हुआ, जुकाम हुआ, पेट में दर्द हुआ, टांग टूट गई, यू वेंट टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक, आप निकले प्रिस्क्रिप्शन के साथ जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दवाइयां थी, बहुत स्पेसिफिक नाम लिखे जाते थे. आप फार्मेसी में गए, फार्मासिस्ट ने कहा ये वाला ब्रांड तो नहीं है पर इससे मिलता जुलता सेम सॉल्ट का एक और है, ले लो. क्यों? क्योंकि उस पे फार्मासिस्ट को कट मिलता है और जो डॉक्टर ने लिखा उससे डॉक्टर को कट मिलता है. मेडिकल मार्केटिंग इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स फार्मा कंपनी खर्च करते हैं. अगर मैं आपको I come from a family where there are a lot of doctors, and I can tell you this, when a super senior doctor is going for a medical conference, his family can travel with him, he can travel for free, there are lots and lots of benefits. तो ये जो dermatologist approved tag आता है, ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ब्रांड बड़ा अच्छा है. Any monkey can get a dermatologist tested tag अगर वो प्रोडक्ट के लिए आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पे किया है. सिमिलरली इन्फ्लुएंसर्स, आप नायका पे जाइए, राइट, आप नायका पे जाते हैं, बैनर देखेंगे इन्फ्लुएंसर लव्ड, मतलब क्या बहुत अंदर से मोहब्बत निकल रही है इन्फ्लुएंसर्स की एंड दे लव दिस प्रोडक्ट? नो, दे हैव बीन पेड, दोस आर कोलैबोरेशंस, इसलिए आपको वहां उनकी फोटो के साथ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं. यूज योर ब्रेन्स. डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड नंबर 1 और डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड doesn't make a product better, neither does it make a product worse. Scam number 3 या झूठ नंबर 3 या नॉनसेंस नंबर 3, प्रोडक्ट इज non-comedogenic. non-comedogenic का मतलब क्या होता है? लिटरल मतलब ये होता है कि ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता. एंड दिस इज नॉट बीन रेगुलेटेड. दिस टर्म non-comedogenic इज नॉट अ मेडिकल मार्केटिंग टर्म. ये मेडिकल टर्म है भी नहीं, ये मार्केटिंग टर्म है. ठीक है, ये अंग्रेजी का वर्ड है जो एक मेडिकल टर्म है, विच इज slapped onto the product saying that इसमें जो ingredients है उससे आपके pores clog नहीं होते. I can tell you there is ऐसा ingredient बना ही नहीं है दुनिया में अभी तक
जो 100% कह दे कि इससे जितने भी लोग हैं हम, आई थिंक वी आर अबाउट 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, किसी के पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव, it is not an approved term. Because it is not an approved term, it's not a medically approved term. It is a marketing term. And when a product is non-comedogenic, kal jaye pharmacy mein, specifically if you're in the UAE, our pharmacies here are beautiful. They are like little mini Sephoras. They are amazing. Pharmacies mein jaye, उठाएं कोई भी प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिकली लव्ड नहीं, अप्रूव्ड, टेस्टेड, नॉन कोमोडोजेनिक, जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आपको ये प्राइस ये टैग्स दिखेंगे, they will 100% be more expensive. That is all marketing. It's not true. Having said that, yes, there are a few ingredients that have lesser ability to clog pores. So आप वो चूज करें. But just because कोई बोल रहा है कि I use products that are non-comedogenic and therefore they are so good, that's just bullshit. So this was point number 3. Point number 4, जो इसी का भाई है, because usually ये hand in hand जाते हैं, non-comedogenic and hypoallergenic. मतलब इससे किसी को एलर्जी नहीं होगी. उफ, मतलब this is almost like saying कि like I am God, right? मुझसे बेहतर कोई नहीं है, इससे अच्छा तो कुछ बना ही नहीं सकता. How can you say that of the 7 billion people on this earth, this product will not give allergy to anyone? Again, it's a marketing term. It's not a medical term. Your products, which are so-called non-comedogenic, non-hypoallergenic, potentially have the same amount of chemicals, the exact same formulations, the same amount of toxins that you may be worried about as any other skincare brand. So you need to stop paying a crazy premium for these things. Having said that, अगर आपकी skin super sensitive है, अगर आपको एक्जिमा है, अगर आपको रोजेशिया है, आपको genuinely skin problem है, right, which happens to like 1 to 2% of people in the population, right? So eczema is not like everybody has eczema, not everybody has rosacea. If you have certain problems like that, then yes, it is worth it. आप premium pay करें and buy a product that is less likely to give you irritation because आपके skin में एक genuine problem है. But अगर आपकी skin में कोई problem नहीं है, then save your dollar and just move on with life. Anyways, let's come on to number 5, which is my favorite, in the sense it actually makes me angry, and that is clean beauty. Clean beauty has to be the biggest scam of the decade. Companies को समझ नहीं आ रहा था after a point in time कि हम कैसे हम और बेचें, मतलब हम कैसे बताएं कि we are better than the others. So they came up with this whole thing of clean beauty. If you look at any product, and I'm going to put a lot of references in the description and on the screen, किसी भी क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट को उठा के देख लें, उसमें उतने ही केमिकल्स हैं जितने नॉर्मल प्रोडक्ट्स में होते हैं. इनफैक्ट क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैव अ बिगर स्कैम टू देम. दे से लेट्स नॉट यूज सल्फेट्स एंड पैराबेन्स. Sulfates, not all sulfates are bad, number 1. Parabens are a great preservative. अगर प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्लीन है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है. मतलब हमने दे दिए $200, प्रोडक्ट काम भी नहीं करेगा, एक्सपायर भी जल्दी होगा. व्हाट डिड वी गेट इन रिटर्न? इट इज absolutely crazy. This whole clean beauty thing is nothing short of a scam. There are a few brands that are genuinely clean, right, which are genuinely avoiding a few ingredients which are considered harmful in high dosage. इसके बारे में आगे बात करेंगे. In high dosage, which is a great thing. But in general, clean beauty is not for everyone. It's like saying मुझे बादाम बहुत पसंद है. I love almonds, right? Now कुछ लोगों को बादाम खाने से ऐसी एलर्जी होती है that they will land up in a hospital and on an ICU bed. Does that mean कि almonds ही खराब है? That doesn't mean almonds खराब है. कुछ लोगों को almonds सूट नहीं करते, वो लोग almonds ना खाएं. सेम क्लीन ब्यूटी, कुछ लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते, आप कृपया वो चीजें मत लगाएं. बाकी ऑफ द पॉपुलेशन doesn't need to be overpaying for a product that doesn't work, expires faster, and is not effective. So number 5 is clean beauty, and in sync with that is natural skincare. In fact, natural skincare के बारे में तो बहुत सारी मैंने बात करी थी. Pick up any brands. Kama, Kaya, Forest Essentials, Himalaya, cheap ones, the एकदम सस्ते वाले भी, सब में केमिकल्स हैं. पलट के एक बार डब्बा देख लो एंड देन कम बैक टू मी एंड से कि वो जो नीम का पत्ता आपको बॉक्स पे दिखा था, जिसकी वजह से आपने उस प्योरिफाइंग फेस वॉश को लिया, उसमें कितना ही नीम है. एंड it also has fragrance and it also has color, which is actually much worse than any other brand that you might get.
So think about the next time you want to pick up natural skincare, clean skincare, any of these things. How clean are they? आपके natural skincare में natural ingredients कितने हैं उसे एक बार जरूर देख लें. And how clean is your clean skincare? Do review that as well. Number 7, and this is a division between me and I think the entire skincare industry, and that is fragrance free. Now let me tell you something. Fragrance free का भी वो बादामों वाला ही हिसाब है. If you're allergic to fragrance, if you are sensitive, then you will not use it. It is not good for you. But 99% of the population is not allergic and not sensitive. So does that mean कि जो 99% लोग हैं, they do not enjoy the sensory experience of their skincare? अब सेंसरी एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आप कोई क्रीम लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, you're patting on an oil, there is this beautiful fragrance to it. That fragrance is a sensory experience. वो हमारे senses को काम करता है. It makes us feel good. That is an experience. Fragrance gives you that experience. कुछ 1% दुनिया को वो एक्सपीरियंस सूट नहीं करता. Does that mean fragrance is a bad thing? No. काफी लोगों को दूध सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे. I can't have lactose anymore. It breaks me out. Does that mean सब लोगों को दूध पीना बंद कर देना चाहिए? It's a very bad thing. Nobody should have it again. No. जिन्हें सूट करता है वो प्लीज दूध दही घी जरूर खाएं, because it has a lot of health benefits. It's terrible for me, but it's brilliant for other people. Same as the thing for fragrance. Having said that, I do have one issue with fragrance, and it is the type of fragrance that you're adding. Linalool, limonene, सबसे सस्ता, सबसे synthetic फ्रेग्रेंस. अगर आपके डिस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा ऊपर है तो उससे प्रॉब्लम है. और दूसरी प्रॉब्लम तब होती है जब फ्रेग्रेंस चाहे कितना भी अच्छा हो, नाक को पसंद ना आए तो भी प्रॉब्लम होती है. फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ पर्टिकुलर इंडियन ब्रांड, पिलग्रिम. Everything is heavily fragrance. Now, I don't mind fragrance, but it's just very champa chameli ka tel type, and I don't quite enjoy it. So that is my problem with it, that I don't like that fragrance. Fragrance is not a bad thing. If you enjoy fragrance, then go ahead and use it as long as your skin is not sensitive to it. So fragrance was number 7. Another huge thing that people make a huge deal about as if उनकी किडनी जाने वाली है, पर कुछ नहीं होता. Number 8. एक्चुअली किडनी जाने वाली बात इस पे होनी चाहिए, अल्कोहल. अब देखें गाइस, देयर इज सैनिटाइजर में अल्कोहल है, जो मैं डर्मा रोलर को साफ करती हूँ वो भी अल्कोहल है. ठीक है, अल्कोहल के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. एंड इन जनरल, quality skincare is not using denatured alcohol in the ingredient. And even if it is using denatured alcohol, there are two parts to it. कितना denatured alcohol use हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है? denatured alcohol, not denatured alcohol, but alcohol in general, cetyl alcohol. There are other different forms of alcohol. They are called fatty alcohols that are really good for you because वो product के penetration को improve करते हैं. यानी जो active या जो main formula है skin पे better penetrate करता है, better results देता है. So it improves penetration and it is a great antimicrobial agent. तो अल्कोहल जरूरी है. अब कौन से टाइप का अल्कोहल यूज कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन. बट जनरली सारे अल्कोहल को कैटेगराइज करना एंड सेइंग दैट इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, दैट्स टेरिबल. इट्स नॉट टेरिबल. यस, इफ यू हैव एक्सेसिवली ड्राई सेंसिटिव स्किन, इट मे बी a problem for you. Most people don't. Most people have healthy skin. I have consulted at least on an average, अगर मैं average 100 भी लूं over the last year and a half, right? Over 1,500 people. And I can tell you, of those 1,500 people, 99% people have normal skin or they have oily skin. Less than 1% people have sensitive skin. और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव भी होती है वो इसलिए होती है because वो कुछ उल्टा सीधा लगा लेते हैं. So it has nothing to do with alcohol. Alcohol has different forms. I'm going to put them in the description, so read about it. There are lots of articles you can refer to. Not all alcohol is bad. Next one, petrolatum. अब देखें, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वैसलीन एंड स्लगिंग. मुझे नहीं पसंद है बिकॉज आई थिंक इट कॉजेज मीलिया. आई जस्ट डोंट एंजॉय इट. बट द पेट्रोलाटम जेली is not the same as the crude petrolatum that is used in industries. बहुत फर्क है, right? It's like saying alcohol perfume में होता है, alcohol शराब में भी होता है. तो लोग perfume थोड़ी पी रहे हैं and getting drunk on it. I'm just done with like people not using their brains. And it's okay. I mean, common sense is not a very common thing in common people. So, what line?
कॉमन सेंस इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग इन कॉमन पीपल. तो शायर बन गई, शायरा बन गई. Anywho, so it's not the same. So it's not the same as in industrial grade petrolatum that is being handed out like candy. So Vaseline is safe. Your CeraVe healing ointment is safe. Any other form of petroleum jelly is safe. मुझे पसंद नहीं है. That is a me problem. It's a Nippon problem. I don't like it. If you enjoy putting Vaseline all over your face, then go for it. Knock yourself out. And last but not the least, collagen creams. Olay, Nivea, everybody is doing this collagen pro range, collagen this range. Collagen उसमें होता नहीं है. Collagen can never penetrate into your skin. ठीक है, it's not possible. Molecule है बहुत बड़ा सा, skin का molecular size छोटा है, it cannot penetrate. End of story. Now, क्या होता है उसमें कोलेजन के नाम पे? उसमें होते हैं पेप्टाइड्स. वो होते हैं 2 बूंद. एंड आई हैव डन अ होल डीप डाइव इनटू पेप्टाइड्स एंड देम नॉट हैविंग पेप्टाइड्स एंड द होल स्कैम, एंड यू कैन सी दोस वीडियोस लेटर. ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इफ अ क्रीम says it is collagen boosting, run away to another counter. If a cream is saying that it is all natural, clean, beautiful, this, that, fragrance free, and it's $500, run away to another counter. Skincare needs to be effective. And that is what I wanted to start out with. You know, positivity and negativity में ये फर्क होता है that negativity is louder than positivity. Positivity is quiet because it has inner strength. It doesn't need to deal with all of this negativity. Similarly, जो झूठ होता है ना, झूठ को बहुत शोर मचाने की जरूरत होती है, which is why they need all of these puppets, screaming around that, oh, this is bad, ये करो तो मर जाओगे, वो किया तो मर जाओगे. I can tell you, the air in the cities we live in has higher chances of damaging our health way more than the skincare you will ever apply on your face. So stay safe. Don't let people scam you. Don't let brands scam you. Don't let influencers, content creators, dermatologists. I am very, very, very careful of doctors, right? I respect them a lot. I think they're God's gift to humankind. Yes, they treat people, etc. All that said and done, the amount of pushes when it comes to drugs that come from doctors and in general. I'm going to tell you a story if you guys are interested. A few months ago, I was diagnosed with insulin resistance. So I went in for my regular blood test, and then they said, we should test you for insulin resistance. And my insulin was really spiking. But मेरा HbA1c, जो pre-diabetic के लिए टेस्ट होता है, जो मैं साल में हर साल कराती हूँ, was completely normal. My fasting, sugar, everything is fine. No signs of diabetes. Everything is below cholesterol. मतलब मेरी मेडिकल रिपोर्ट इंस्टाग्राम पे डाल सकते थे मेरे डॉक्टर, सब बढ़िया था. बट दे सेड कि whatever said and done, एक टेस्ट करा लेना चाहिए. मैंने कराया, insulin was spiking. So I went to the doctor, and the doctor said, listen, metformin, which is a drug which is given to people who have diabetes, start taking this morning, evening for 3 months. And I was like, if I start this, and my mom was diabetic. My nani was diabetic. So if I'm pre-diabetic, it's not like I don't need a doctor to tell me that. Anywho, I bade obediently went and bought the medicine. एक मैंने खा ली रात को, और उसके बाद मैंने कहा कि listen, I started reading up on it, and I realized that this is for diabetic people. This is not really given to people who are pre-diabetic or in insulin resistant kind of a state as I am. So I started doing my intermittent fasting and all of those things. And मैंने 2 and 3 opinions लिए. I went to 2 endocrinologists. The first one again said कि नहीं बिल्कुल ठीक है, metformin ले लो. उसके बाद मैंने कहा तो मेरी छुड़वाओगे कैसे? I don't want to be on a drug all my life. How are you going to get me off this metformin? They said नहीं हम wean off कर लेंगे. We'll create a plan. Anyways, the third doctor, God bless that doctor. He says, listen, I'm saying this, I'm very ashamed, but ये metformin drug की sales बढ़ाने का last 20 years में doctors and pharma companies का एक partnership है. आज के डेट में किसी का भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, this is what we prescribe to them. You're young, you're healthy, all your parameters are fine, don't do this, lose some weight, do your intermittent fasting, try and control it. नहीं होता है, 6 महीने के बाद हम रिव्यू करेंगे. 4 डॉक्टर्स के बाद, फर्स्ट जिसने प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद 2 और फिर तीसरा डॉक्टर, चौथे डॉक्टर से मुझे मिली सही एडवाइस. एंड दिस इज माई हेल्थ. इट्स
a lifelong of medication that I was being put on because there is an entire industry जो एक particular drug को बेचने में लगी हुई है. So this is why not just dermatology, I'm not talking of doctors who are dermatologists, I'm talking of everything. When you go to a doctor, when you go to anybody, right, question it, ask questions. मेरे से भी कोई गलती होती है, पूछे मुझसे ये ऐसे क्यों किया. I'll try and answer it to the best of my ability. Because if God did not want you to think, if God did not want you to question, वो आपको दिमाग नहीं देते, राइट और दिमाग देते भी तो जुबान नहीं देते. बट अगर आपके पास दिमाग जुबान दोनों चल रहे हैं, दोनों सलामत हैं, दैट मीन्स द ऑलमाइटी योर क्रिएटर wants you to ask questions and get answers. So don't trust anybody blindly. The video has overrun. It has become very, very long. I'm so sorry. But this was an important video. If you did enjoy it, do hit the subscribe button. I'll see you tomorrow with another one. Till then, take great care of yourself. Bye.